यस मैडम कंट्रोलर। फर्स्ट कट ऑफ में जो भी क्वालिफाई हुए हैं वो समझ गए, डोंट रिपीट, क्योंकि ये तो जो है गलत हो रहा है यहाँ पर। पॉज हियर फॉर अ मिनट, लेट हिम आंसर। जब आपके मुताबिक फर्स्ट राउंड में लास्ट फीमेल कैंडिडेट, अभी मैं जनरल डीएफ और एसएएफ को क्लब कर देता हूं, 75.77 से किस ईडब्ल्यूएस फीमेल के मार्क्स ज्यादा थे जो कि माइग्रेट कर सकते थे, अदरवाइज यू कुड नॉट हैव मर्ज्ड देम। उसका सेपरेट बाइफरकेशन नहीं है, बाइफरकेशन आपको बताना पड़ेगा। मैं आपको बताना पड़ेगा, सर, योर कंट्रोलर इज हियर, अदरवाइज यू कुड नॉट हैव मर्ज्ड द टू लिस्ट्स। अभी डेटा मैं सप्लाई कर दूंगा। हाँ ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग हिज आर्गुमेंट कि मार्क्स तो फर्स्ट एग्जाम के ही हैं, सेकंड एग्जाम तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। सर, हाउ मेनी ईडब्ल्यूएस फीमेल्स had secured more than 75.77 मार्क्स जो दौड़ में क्वालिफाई करनी थी? दौड़ में हमें मतलब नहीं है। इन 119 महिलाओं में से किससे ज्यादा मार्क्स हैं ईडब्ल्यूएस के? क्वेश्चन इज वेरी पॉइंटेड। ये जो 119 सिलेक्ट हुई, ये सब 75.77 के अबव हैं कैंडिडेट्स, ठीक है, उसके नीचे तो सिलेक्ट हो ही नहीं सकते थे। अब जो ईडब्ल्यूएस है जिसका की कट ऑफ 67.47 था, उसमें से यू विल हैव टू शो दैट 197 कैंडिडेट्स अनलेस देयर अदरवाइज देयर माइग्रेशन इज इलीगल, कि भाई आपको तो इतने प्रतिशत मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, आपकी पॉलिसी गलत है, इतना तो यहां से प्रमाणित हो जाएगा। दिस इज अ पॉलिटिकल प्लाव। इतना आज बता दीजिए, आई विल डिक्टेट द ऑर्डर्स। Plus 347 EWS female is equal to 525 candidates qualified for the second phase. It is further submitted that in the actual number 6,000 vacancies, a total of 471 women candidates were to be selected in the UR category and 174 women candidates were to be selected in EWS category. It is further submitted that after second round of selection, 119 UR category females were found eligible for appointment as against 471 and 197 candidates of EWS category females were found eligible for appointment as against 174. It is submitted that since the total posts of URF, which is 471, were not being fulfilled, therefore the entire candidates of EWS-F category were merged in the URF category, making the total candidates of URF category 219 plus 197, 316 eligible for appointment. It is submitted. यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा, you note it for yourself, sir, कि out of these 197 EWS female category, how many of them secured more marks than the female unreserved female? You cannot simply merge them after showing two different cutoffs, sir, for the two categories. Sir, you could not have merged by your own admission. Sir, it is only those EWS female who secured more marks than the unreserved female. They could have migrated to unreserved female category. You will be required to answer this. Please note this question. It is submitted that although the final results show that the cutoff of URF category is 67.5, मान रहे हैं. However, it is submitted that the cutoff is not determined for the second time. However, the mark 67.56 is the last candidate of EWS category which qualified for the second round. However, since entire seats of EWS F category have been transferred to URF category, therefore the marks of the last female candidate of EWS category is shown as 67.56. Pause here for a minute. Let him answer. There will be more clarity. Sir. अब आप ये बताइए दो चीजें। एक, ये जो आपने लिस्ट निकाली है पेज 15-16 पे लगी है, सर, ठीक है, इसमें URF अलग कैटेगरी दिखाई है आपने एंड EWS F अलग कैटेगरी दिखाई है, तो दोनों के अलग अलग मार्क्स क्यों नहीं दिखाए? आपने बोला कि फर्स्ट स्टेज में आप माइग्रेशन परमिसिबल नहीं है, वो फाइनल रिजल्ट में होता है, तो फिर ये क्या है? सर, ये सेकेंड राउंड की फाइनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल कट ऑफ। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि जब आपके मुताबिक फर्स्ट राउंड में लास्ट फीमेल कैंडिडेट, अभी मैं जनरल डीएफ और एसएएफ को क्लब कर देता हूं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, 75.77 था, क्योंकि इनमें से किसी का भी 75.77 नहीं है, तो 75.77 से किस ईडब्ल्यूएस फीमेल के मार्क्स ज्यादा थे जो कि माइग्रेट कर सकते थे, अदरवाइज यू कुड नॉट हैव मर्ज्ड देम।
सर दैट लिस्ट my lord I have annexed, उसका सेपरेट बाइफरकेशन नहीं है, बाइफरकेशन आपको बताना मैं पड़ेगा, सर मैं आपको बताना मैं दे पड़ेगा, दूंगा सर वो योर कंट्रोलर इज हियर, सर अदरवाइज यू कुड नॉट हैव मर्ज द टू लिस्ट, सर फाइनल लिस्ट में you could not have merged the two because as per your own admission, as per the DOPT circular, only those females, since we are dealing with case of Sir, females, therefore I'm referring to females, sir only those females could have migrated from EWS female to EWS general, who would have, sorry, female general unreserved, who had secured more marks than the last selected candidate of female, you are female. वो बताइए। मैं वो इनको बोल दे रहा हूँ, अभी डेटा मैं सप्लाई कर दूंगा। हाँ नहीं, उसी से तो पूरे कंट्रोवर्सी डिटरमिन होगी, क्योंकि ये तो जो है गलत हो रहा है यहाँ पर। आपने प्रीलिम्स के मार्क्स डिस्क्लोज किए नहीं सर, वो बिकॉज ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग हिज आर्गुमेंट, इट इज एक्सेप्टेड फिनोमिना थ्रू आउट द नेशन। प्रीलिम्स के मार्क्स जब मेंस हो जाता है, मेंस के मार्क्स आ जाते हैं, उसके बाद डिस्क्लोज किया जाता है। दैट इज नॉट द, I am not taking that issue against you, sir. The only issue which you are required to show is कि marks तो first exam के ही हैं, second exam तो सिर्फ qualifying है। Sir, I humbly bow down, my lord. If I may just point out why, my lord. हाँ, even assuming why नहीं? First answer, how many EWS females had secured more than 75.77 marks out of this figure of 119? Sir. Which you made them to migrate. It is 119 ना? Sir, 119 ही क्वालिफाई किए थे against 374. नहीं, sorry, 197. सर 119 ही क्वालिफाई की थी यूआर महिलाएं। यूआर महिलाएं 119 की थी जो दौड़ में क्वालिफाई करी थी। दौड़ में हमें मतलब नहीं है सर, दौड़ से तो फाइनल रिजल्ट आएगा। हाँ। आप तो ये बताइए, इन 119 महिलाओं में से किससे ज्यादा मार्क्स हैं ईडब्ल्यूएस के? तभी तो आप इधर माइग्रेट करेंगे, नहीं तो आपको उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही भरना है। सर क्यों किया सर? मैं उसका रीजन है सर। क्यों नहीं? पहले जो आपने शुरू में बताया डीओपीटी का सर्कुलर आपने खुद पढ़ा है सर, उसमें बहुत कैटेगरिकली दिया हुआ है कि क्यों कब कर सकते हैं, वो कौन सी परिस्थिति थी, वो आप अभी आंसर करिए। यस मैडम कंट्रोलर। योर सबमिशन सर, एक्चुअली जो फर्स्ट कट ऑफ है सर, फर्स्ट कट ऑफ में जो भी क्वालिफाई हुए हैं वो समझ गए, डोंट रिपीट। यस सर, माय क्वेश्चन इज वेरी पॉइंटेड। फर्स्ट कट ऑफ में जी आपने अनरिजर्व्ड का एक लिस्ट बना लिया। जी सर, उस लिस्ट में से वो लिस्ट था 75.77 फॉर कन्वीनियंस। आई हैव मर्ज्ड 76.97 into 75.77 which is the lower cutoff for you are female। ये जो 119 सिलेक्ट हुई, ये सब 75.77 के अबव हैं कैंडिडेट्स, ठीक है? उसके नीचे तो सिलेक्ट हो ही नहीं सकते थे। अब जो ईडब्ल्यूएस है जिसका की कट ऑफ 67.47 था, उसमें से you will have to show that 197 candidates who were made to migrate to UR female category were those candidates who had secured more than 75.77 marks, unless otherwise their migration is illegal. And if once we hold that their migration is illegal, then the number remaining of seats will give a leverage to the candidates in the ratio of 1:5. मतलब इवन मतलब अज्यूमिंग मतलब वो फिगर्स हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, अज्यूमिंग मतलब कि मर्जर गलत है, मतलब इवन अदरवाइज मतलब दैट इज नॉट द केस ऑफ द पिटिशनर। नहीं, मर्जर गलत है तो एवरीथिंग विल रीओपन। अगर मर्जर गलत है, नहीं बात समझिए आप सर, मर्जर अगर गलत है तो उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। वो हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं थे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते कि भाई आपको तो इतने प्रतिशत मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, उसके नीचे वाले सारे अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड है, और उसके बाद हम उस मिनिमम क्वालिफाइंग के ऊपर 5 गुना उठाएंगे, then things would have been different. Minimum here in the scheme of the examination as per the rules, my lord, minimum qualifying marks कुछ नहीं थे। मैं तो खुद ही, मुझे मालूम है, पढ़ लिया मैंने सर। नहीं थे ना सर, जब नहीं थे तो फिर वो 5 गुना का जो एक्सपेंशन होगा सर। assuming my lord, I'll just my lord just bear with me for 2 minutes my lord, assuming कि जो उनको फायदा ना हो, लेकिन आपको जो है आपकी पॉलिसी गलत है, इतना तो यहाँ से प्रमाणित हो जाएगा। You could not have migrated those people, and those should have been, because tomorrow when you are going to issue advertisement for the unreserved category,
you will show these number of seats, lesser seats, unfilled seats in the next advertisement. So आपका उतना तक तो जो है set aside होगा ही होगा, because you could not have allowed migration of EWS category females who had not secured marks more than general category unreserved female category candidates without any rhyme and reason, and that is against the DOPT policy. मतलब why we have done this? No, why we have नहीं मतलब admittedly किया होगा, किया क्योंकि नंबर है ना, आपने उसको एडमिट करिए. नहीं सर, I'll bow down my lord, I'll clarify क्यों किया. मतलब there were seats remaining vacant from the UR female category. क्या हो गया मतलब क्या हो गया? Since my lord, अरे जब DOPT कहता है कि सिर्फ वही माइग्रेट करेंगे तो आप उसको क्यों, आप यही तो मैं बोल रहा हूँ. दिस इज अ पॉलिटिकल प्ले which you are playing and which you are coming to, which shows that you are not an independent examining body. No, because see, they wanted to show a different class of EWS female. Those posts will shown as vacant. They will be again advertised, and against those 197 or whatever posts, again unreserved EWS women will be entitled to fill at the cost of unreserved female category not belonging to मतलब वो ऐसा नहीं होगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी. मतलब वी कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड द वेकेंट पोस्ट पर आगे. मतलब आप नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट तो रिक्विजिशन भेजेगा. नहीं भेजेगा सर, नहीं भेजेगा सर. क्यों? हमें उससे मतलब नहीं है. आप तो हमें इतना बता दीजिए, बस इतना आज बता दीजिए. आई विल डिक्टेट द ऑर्डर्स that against the DOPT directives which you have enclosed, which you have relied, which you have, how could you allow migration of all EWS candidates, female candidates to general category? But that has been done, my lord, only for the reason. No. नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ. It could not have been done as per your whims and fancies. There has to be some rule. Show me the rule. Therefore, that is what I am submitting, my lord. The rule says that they have to compete against the UR category. Now, my lord, since there were the requisite number of UR category females were not there. No. Again it is said, you have enclosed with the affidavit, sir, that who is entitled to migrate. It is not any Tom, Dick and Harry can migrate. आपने यहाँ पर खुद ही कहा है, a person belonging to EWS cannot be denied the right to compete for appointment against an unreserved vacancy. Persons belonging to EWS who are selected on the basis of merit and not on account of reservation are not to be counted towards the quota meant for reservation. Now they have not come on their own merit. They have come under the quota, so they have to be allocated against their quota. They cannot be allocated against general category. अब बोला किसका चेयरमैन का फाइल करेंगे? नहीं मैम सर, कंट्रोलर है, मैं अभी दे दूंगा. हाँ बताइए आप. आई कंक्लूड दी जजमेंट सर. अभी बताइए. आई हैव टू डिक्टेट दिस ऑर्डर. इट हैज टू बी डिक्टेटेड राइट नाउ. नॉट मच जस्ट रोल ओवर फॉर 10 मिनट्स. नो सर, उतना तो समय लगेगा सर वो डेटा निकालने में. डेटा आपको ये सब तैयारी करके आना चाहिए थी. जब आपके कंट्रोलर को यहाँ बुलाया गया था सर, तो ये एक्सपेक्टेड था. ऐसा नहीं होता कि जब प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, मैडम आप कहीं नहीं जाएंगे, यही रखिए. जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे साहब मैं किताब खरीद के लाता हूँ फिर उत्तर दूंगा. Sorry. Data has to be extracted from the computer. I'll require 5 minutes for that. You have to give me. Otherwise, forget about data. Whatever number of candidates who had secured less than these cutoff marks, 76.97 and 75.97 in the EWS category, they'll have to go back to their respective EWS category. And Mr. Rupra, you will have to satisfy one more thing. Their contention is, now let us summarize the things. Their contention is that initially general category posts 5 times candidates were called. When the 5 times candidates were called under general category, there was no bifurcation of male and female. The only bifurcation was of unreserved and EWS, which means unreserved but a special category fulfilling those criteria. In that category of 5 times, you had not fallen in. Now, after that, when they held this second round of qualifying test, those persons who qualified were given appointment. Remaining seats have been left vacant. One aspect I have already dealt with, which appears to be a real gray area, but that is not going to benefit you in the real terms.
ठीक है, इसके बाद अगर आपको कुछ कहना है तो आप बताइए। My lord, the answer to this particular query probably is at page number 34. 34, let us 34 of my petition. yes please. It is not only horizontal. लिखा हुआ है पेज नंबर 34 के लास्ट में बॉटम में, पढ़िएगा प्लीज। मध्य प्रदेश शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सो द्वारा महिलाओं के लिए दिए गए 33% हॉरिजॉन्टल एवं कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण के लिए। हाँ, ठीक है। अब एक ऑनरस कंडीशन होगी। हाँ, कंपार्टमेंट वाइज मीन्स what I understand, Lord, because everything is developing, means in every category there has to be. नहीं ठीक है ना, तो एवरी कैटेगरी में है ना 30%, 33% एससी वुमेन के लिए भी है, एसटी के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है, जनरल के लिए भी है। जनरल में एक एक्स्ट्रा क्लास बना दी गई अमेंडमेंट से कि जिनके पास आर्थिक रूप से असक्षम है उनके लिए 10% पोस्टें रहेंगी। जी, अब ये मेरा ये कहना है। One point your lordship has caught, but my lord has also saying that मेरे को क्या फायदा होगा इससे? मैं वही आपसे समझना चाहता हूं। वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। Unless lord the said seats are thrown open, still I'll write dictate my order on merits. आपको फायदा हो या ना हो, every wrong is to be corrected if it is brought to the court. नहीं, what I feel, Lord, when those seats will come here, then they'll be required to call 5 times the number. Then probably I'll come in the zone of consideration. वही मैं समझने का प्रयास कर रहा था। Now there's one. वो पोस्ट टोटल क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल मोटा ये मान लें 1200 पोस्टें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए थी, ठीक है, और से 120 पोस्टें जो हैं ईडब्ल्यूएस के लिए थी। तो 1200 का 5 गुना 6000, 120 का 5 गुना 600 इन्होंने ईडब्ल्यूएस के अंदर कैंडिडेट बुलाए। उसमें मेल भी आएंगे, फीमेल भी आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद उनको सेकंड राउंड में सब्जेक्ट किया गया। उन 600 में से जो मेल ईडब्ल्यूएस, जो फीमेल ईडब्ल्यूएस क्वालिफाई कर गए, वो अपनी अपनी कैटेगरी में अपॉइंट हो जाएंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि अगर उनके जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर है तो वो जनरल कैटेगरी में माइग्रेट कर जाएंगे, विच इज एप्लीकेबल फॉर इवन एससी एसटी ओबीसी आल्सो, ठीक है। अगर नहीं है तो वो अपनी कैटेगरी में अपॉइंटमेंट पा जाएंगे। केस ये है कि उन 6000 में जनरल कैंडिडेट्स में आपने अपना स्थान नहीं पाया। There is no denying about it. I'll deny that. I'll deny later on. Let my lord complete the premise. ठीक है, क्योंकि आप ईडब्ल्यूएस में नहीं है तो इसलिए ईडब्ल्यूएस को डिस्कस करना। उन 6000 में आपने नहीं पाया, इसलिए यू आर आउट ऑफ द रेस। नाउ आफ्टर दैट कट ऑफ जोन 5 times they have made selections, जो पोस्टें खाली छूट गई वो अब अगली बार एडवर्टाइज। ठीक है। अब my lord, I have got one this thing, lord, of one girl. She belongs to she belongs to EWS and she has got more marks. There is no justification why she has not been. उसको अलग से डील करेंगे, अच्छा, दूसरी बताइए कहाँ है पेज नंबर। दुर्भाग्य से नेहा तिवारी के दस्तावेज मेरे को बहुत लेट मिले, तो मैं ये नाम गलत बोल दिया सर। इसका नाम है शिवानी सिंह। शिवानी सिंह एक ऐसी लड़की है who belongs to EWS, who has got 68.03 marks. Lord, I have got only this. Whether this only this document is it on record? No, it is not on record. She is not a petitioner. She is one of the candidates for that. देखिए, in all fairness, you will have a right to file petition in relation to her, separate petition. Now, second point. This we cannot deal with this issue. ठीक है. Second point, my lord has just now said that they have called 5 times the number that you are not in it, you are out of it. As I respectfully submitted right at the beginning, Lord, that they are working in complete opaqueness. Now, Lord, what happened? All the female candidates filed a writ petition before this honorable court, in which they said that 5 times the number of women candidates you have to call. हम लोग 1980 33% हैं, इसका 5 times 9000 कितना हो जाता है? You have to call me. So your lordship dismissed. Writ petition में क्या हुआ? Your lordship dismissed the writ petition, saying that they have said that 30,000 plus they have called. You please get lost. So my petition was dismissed. Then I filed a writ appeal against that.
Writ appeal did not agree with the view of my lord. What did they say? The writ appeal said that women candidates, SC, ST, OBC सबका 5-5 गुना आपको बुलाना। वो कहाँ है? Yes, रिट पिटीशन का ऑर्डर है और उसके बाद रिट अपील का है सर। रिट पिटीशन में तो हमारा व्यू आपके फेवर में था। हाँ, आपका व्यू मैं बता रहा हूँ सर क्या हुआ था सर। Sir, the only point argued before my lords was that whether 5 times have been called or not. जी। But all this was not argued, my lord. रिट अपील में क्या होगा? रिट अपील का ऑर्डर पढ़े ना अपन, रिट अपील का ऑर्डर पढ़े। अपील में कोई रेशियो डिसाइड नहीं हुआ है, रिट अपील में सिर्फ रिमांड हुआ है मैटर। अरे पढ़ने तो दो। This intra court, because it's going to have very far reaching consequences, that's why I'm taking the valuable time of my lord. नहीं This intra-court appeal takes exception to the order of the learned single judge passed in so-and-so, whereby learned single judge, by taking into account an email sent by respondent number 3, dismissed the petition by holding that the petitioner's apprehension that without forwarding the requisite number of candidates for second stage of selection, they have been unduly disqualified, stands satiated. NS Rupra Learned Council for Appellants submits that all the appellants petitioners are women candidates. As per clause 1.15.2, in the next stage of examination, one candidate is eligible to submit one candidature only. In the second stage, for every group, the 5 times number of candidates as per caste and category shall be invited. The same inference can be drawn from clause 1.15 within bracket 6. In addition, Rupra submits that MP Civil Services Special Provisions for Appointment of Women Rules 1977 urges that as per Rule 3 of the said rules, it is obligatory on the part of the respondents to reserve certain number of posts for women candidates. The said reservation shall be horizontal and compartment-wise. The next submission based is on Gazette notification number so and so were amended and percentage of women was enhanced to 33%. Shri Rupert Advocate submits that learned single judge, while passing the impugned order, only considered the email sent by respondent number 3. In the email, there was no bifurcation of posts on the basis of caste and category. The court considered the number of posts en bloc, and on the basis of that calculation, non-suited the present appellants bata petitioners. If the learned single judge would have considered the bifurcation of the posts as per the aforesaid clauses and rules, the appellants would have been in a position to show that they would have been called and would have been within the zone of consideration for the second phase of selection. The aforesaid pivotal aspect has not been considered by the learned single judge. In dispute of the matter, the impugned order may be interfered with and matter may be remitted back to the writ court to consider the aforesaid vital aspects. राहुल देवाकर उन्होंने एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन लिया। That technical objection was valid, madam. चलो ठीक है, let us read. Say Thakur oppose the prayer. Rahul Devakar, Learned Counsel for respondent number 3, submits that this point raised by Learned Counsel of the appellant, that the vacancies are to be calculated on the basis of each caste and category, was not raised before the learned single judge. Because a plea abundant cannot be permitted to be raised for the first time before the writ appellate court. For this reason alone, writ petition deserves to be dismissed. Just with this, Sri Rupra submits that this plea was very well raised in para 1 and para 6.2 of the writ petition. Even if plea was abundant, it raised hui thi sir wo. It can be raised before the learned writ appellate court. The party confined their arguments to the extent indicated above. We have heard learned. So it is apposite to quote relevant rules on which Shri Rupra has placed reliance. 1.15.2 अगले चरण की परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा की मेरिट सूची। एक उम्मीदवार को एक आवेदन करने की पात्रता होगी। द्वितीय चरण हेतु ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को प्रत्येक समूह के लिए जाति वर्ग के अनुसार रिक्तियों की 5 गुनी संख्या में बुलाया जाएगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जाति वर्ग अनुसार रिक्त पदों के 5 गुना संख्या में रोल नंबर के क्रम में चयन सूची पुलिस मुख्यालय के माध्यम से चयन समितियों को उपलब्ध कराई जाएगी। जाति वर्ग अनुसार 5 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जाएगा, भले कुल संख्या 5 गुना से अधिक हो। रूल ऑफ 19 Sir, yeah, then we'll come back to this. Yes, a reservation for posts of women. Notwithstanding anything contained in so and so, there shall be reservation of 30% of all posts in the service under the state in favor of women at the stage of direct recruitment, and the said reservation shall be horizontal and compartment-wise. Compartment-wise important. Explanation: for the purpose of this rule, horizontal and compartment-wise means reservation in each category, namely scheduled caste, scheduled tribe, OBC, and general. सामान्य प्रशासन
उनका एक ज्ञापन 17 नवंबर है, उसमें 30 से बढ़ाकर 33% की. वी कैन स्किप दैट. A plain reading of the impugned order passed by learned single judge shows that the writ petition was dismissed only based on the email information given by the respondent number 3, which was reproduced in the said order. However, learned single judge has not recorded his satisfaction about the exercise of calculation of vacancies undertaken by the respondent number 3 on the anvil of the aforesaid rules. In Bunagi and so and so, the apex court held that if plea is abundant before the learned single judge, even then it can be raised before the appellate court. We can just skip over. Para 15. In our opinion, one of the pivotal questions raised by the appellants before the writ court was regarding calculation of vacancy on the basis of category. The learned single judge has not considered the aspect of calculation on the basis of category and caste. Thus, we deem it proper to set aside the order dated 26 verse so and so to its original number. Parties can raise all possible grounds and argue the matter on merits. The order इस डब्ल्यूपी में क्या हुआ? WP में पेंडिंग है. और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं अभी डीबी ने डिसाइड किया. ये तो बताइए रेशो क्या है इसका? रेशियो नहीं डीबी ने डिसाइड. डीबी ने सिर्फ ये बोल दिया. Without deciding the ratio, how can they question order? I'm asking this question to myself that without deciding the ratio, how can an order be set aside? हम रोज तो जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर्स को सेटिसाइड कर रहे हैं, रिमांड ऑर्डर्स को, कि जहां पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन इशू नहीं बनाया है, जहां पर ऑर्डर 41 रूल 24 से लेके 29-30 तक की कंप्लायंस नहीं है, वहां पर जो है इसमें कहाँ है, क्या 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 देखने के लिए भेजा है? सर अब मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये बात का जवाब मैं नहीं दे. बात का जवाब तो हम, और ये फिर रिपीटिशन क्यों नहीं लगी उसके बाद में? लगी सर, लगी फिर क्या हुआ? चलेगी वो सालों साल. ऐसे नहीं चलेगी सर, मैं बता रहा हूँ. दे शॉर्ट टाइम. They should be fair to the court. They should be. Yes, my lord. My lord, it was listed last week. It was listed last week, my lord. We made a categorical submission. A similar issue has been decided. I'll decide it. Let it be known to him. बहुत पेज 8 पर आइए डीबी के ऑर्डर के, आइए विदाउट एनी प्रेजुडिस. यस, पढ़िए पेज 8 में पहला पैराग्राफ फिर से पढ़िए. पेज 8 में एक उम्मीदवार को एक आवेदन करने की पात्रता होगी द्वितीय चरण हेतु ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को प्रत्येक समूह के लिए, प्रत्येक समूह क्या है? समूह. अब मेरा समूह कहना है समूह इज ग्रुप. Let us be very clear. Let us try to understand. I thought that DB will explain it. प्रत्येक समूह के लिए जाति वर्ग के अनुसार, समूह इज जनरल, ओबीसी. नहीं, जाति वर्ग इज जनरल, ओबीसी. नहीं, समूह मीन्स नहीं होती है, जाति जनरल नहीं होती है. सॉरी, जाति का कंसेप्ट सोशियोलॉजी से आया है. सोशियोलॉजी में जाति सामान्य का कहीं नहीं है. वर्ण 4 है, जातियां अलग अलग हैं, और जातियों के विभिन्न विभेद जो है वो सोशियोलॉजी में बताए गए हैं. ठीक है, जाति सामान्य नहीं होती है. जाति तो सभी सामान्य है ऐसा देखा जाए तो. अगर कोई केवट है वो भी सामान्य है, बिकॉज ही इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. नहीं, जैसे अनुसूचित जाति. नहीं, अनुसूचित जाति इज अ शेड्यूल्ड कास्ट, दैट इज दोज कास्ट व्हिच हैव बीन put in the schedule by His Excellency President of India. The schedule appended to the Constitution. जी sir. Scheduled tribe means those tribes who finds mention in the schedule appended to the Constitution, notified by His Excellency President of India. Yes. That is scheduled caste and scheduled tribe. Other than scheduled caste and scheduled tribe, every caste is general. Then a sub-stratification came in that certain castes were notified as OBC after Indira Shawnee's case. But समूह क्या है? पहले समूह को समझना पड़ेगा. समूह, what my learned friend has today said that समूह means GD, रेडियो, ये इन्होंने ऐसा मेरे को बोला जी. ऐसा इन्होंने. मेरा ये कहना है जाति वर्ग के अनुसार, from what I understand, for example, ex servicemen, women, वो जाति नहीं है. SC ST वर्ग जाति वर्ग, समूह नहीं है वो. ये मेरा इंटरप्रिटेशन है. ठीक है. That's all. That's not the main thrust of my case. Main thrust of my case is based on Mohinder Singh Gill, my lord. That I'll decide. I do not want them to justify annexure P1 on the basis of any material which is not available on the body of annexure P1. ये मेरा आप argument. पर वो वही है कि the issue was whether in the first phase, my lord, 5 times would be required, my lord, or not. ये तो मैंने आपका आर्गुमेंट रिजेक्ट भी नहीं किया है मैंने. आई हैव एक्सेप्टेड दैट आर्गुमेंट. हाँ, ठीक है.
जी No, my lord, we have calculated, my lord, the number as the question was from Ji. my lord. My lord, there are 156 EWS candidates, my lord, who have secured less marks, my lord, than the general female. 156 Now, my lord, in that record, EWS candidates. female. Female. We are dealing with female Sir. only. Female who secured less marks than unreserved female. My lord, if I may just point